शहर लखनऊ, किरदार मेरे नाना नानी, दूसरे घर वाले और मैं। मेरी उम्र 8 बरस है। बाप बंबई में है, माँ कब्र में। दिन भर घर के आंगन में अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक डरावने से मास्टर साहब आते हैं। उन्हें 15 रुपये महीने दिया जाता है। ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज बताई जाती है। सुबह खर्च करने के लिए एक अधन्ना और शाम को एक इकन्नी दी जाती है, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सुबह रामजी लाल बनिए की दुकान से रंगीन गोलियां खरीदता हूं और शाम को सामने फुटपाथ पर खोमचा लगाने वाले भगवती की चाट पर इकन्नी लुटाता हूं। ऐश ही ऐश है। स्कूल खुल गए हैं। मेरा दाखला लखनऊ के मशहूर स्कूल कॉलविन ताल्लुकेदार कॉलेज में 6ठी क्लास में करा दिया जाता है। पहले यहाँ सिर्फ ताल्लुकेदार के बेटे पढ़ सकते थे, अब मेरे जैसे कमजातों को भी दाखला मिल जाता है। अभी बहुत महंगा स्कूल है। मेरी फीस 17 रुपये महीने है। ये बात बहुत अच्छी तरह याद है, इसलिए कि रोज जाने दीजिए। मेरी क्लास में कई बच्चे घड़ी बांधते हैं। वो सब बहुत अमीर घरों के हैं। उनके पास कितने अच्छे अच्छे स्वेटर हैं। एक के पास तो फाउंटेन पेन भी है। ये बच्चे इंटरवल में स्कूल की कैंटीन से 8 आने का चॉकलेट खरीदते हैं। अब भगवती की चाट अच्छी नहीं लगती। कल क्लास में राकेश कह रहा था उसके डैडी ने कहा है कि वो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे। कल मेरे नाना कह रहे थे, अरे कमबख्त, मैट्रिक पास कर ले तो किसी डाकखाने में मोहर लगाने की नौकरी तो मिल जाएगी। उस उम्र में जब बच्चे इंजन ड्राइवर बनने का ख्वाब देखते हैं, मैंने फैसला कर लिया है कि बड़ा होकर अमीर बनूंगा। Bombay Central, the city of Bombay. Characters, film industry, friends, foes, and I. I get off at Bombay Central Station on 4th October 1964. A verdict about my life is to be delivered in this courtroom. I have to leave my father's house 6 days after arriving in Bombay. I have 27 paise in my pocket. I am happy that if one day I were to have 28 paise in my pocket, I would be in profit, and the world in loss. It's been 2 years since I have been in Bombay, but I have no roof over my head and no assurance of food, although I have written the dialogues for a small film at a salary of ₹100 a month. Sometimes I get work as an assistant somewhere. I get some small odd job somewhere, sometimes not even that. I have come to a producer's office in Dadar to ask for the money that is owed to me. He had asked me to write some comedy scenes for his film. The scenes will go under the name of the famous writer who is writing the film. The office is closed. I have to go back to Bandra, which is quite far. I have just about enough money to either buy a bus ticket or eat something. But then I will have to go back on foot. I buy some chana and fill my pocket. Then I set off on my journey on foot. As I pass by the gate of Kohinoor Mills, I think, perhaps everything will change, but this gate will remain. One day, I shall go past this very gate in my car. I have found work writing the dialogues of a film. I write some scenes and go to the director's house. He is sitting and eating pineapple for breakfast. He takes the scenes from me and reads them. Then he throws all the papers in my face. He throws me out of the film and says I can never ever become a writer. As I walk in the blistering sunlight, I wipe a tear from the corner of my eye and tell myself that one day I will show this director that then I don't know why, but the thought enters my mind, does this director eat pineapple every day for breakfast? मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो में रहता हूँ। कंपाउंड में कहीं भी सो जाता हूँ, कभी किसी बरामदे में, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी बेंच पर। आजकल एक कमरे में सोने का मौका मिल गया है। स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों से लगी बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, जिनमें फिल्म पाकीज़ा के दर्जनों कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई हैं, इसलिए इन दिनों पाकीज़ा की शूटिंग बंद है। एक दिन मैं अलमारी का खाना खोलता हूँ, इसमें फिल्म में इस्तेमाल होने वाली
पुरानी तरह के जूते, चप्पल और सैंडल भरे हैं, और उन्हीं में से मीना कुमारी के 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी पड़े हैं। मैं उन्हें झाड़ पोंछ कर अलग रख देता हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म अवार्ड को छुआ है। रोज़ रात को कमरा अंदर से बंद करता और वो ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि जब ये ट्रॉफी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजता हुआ ये हॉल में बैठे हुए लोग किस तरफ मेरी तरफ देखकर कितना मुस्कुराएंगे और कैसे हाथ हिलाएंगे। इसके पहले कि इस बारे में कोई फैसला कर सकूं, स्टूडियो के बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जो लोग स्टूडियो में काम नहीं करते वो कंपाउंड में भी रह नहीं सकते। Even in my college days in Bhopal, I had no particular place to live. My friend Mushtaq Singh asked me to come and share his room. The story goes like this. Mushtaq Singh has a job and he studies too. He is the head of the college Urdu Association. My Urdu is very good, but his is even better. I know countless sher by heart. He knows even more. I am away from my family. He has no family. See? He is better than me at everything. For the past year, he has been bearing the burden of keeping our friendship fed and dressed. That is, he feeds me and also gets my clothes stitched. He is a devout Sikh, but it is his responsibility to buy cigarettes for me. Now I have begun to drink too sometimes. The two of us are sitting and drinking one night. He is telling me about the partition and the riots of those days. He was very young then, but he remembers how 2 Muslim girls were pushed into a burning tar coal drum in Karol Bagh in Delhi, and how a Muslim boy was. I interrupt him by saying, "What do you want, Mushtaq Singh? For the past 1 hour you've been telling me about all these incidents. Are you trying to turn me into a supporter of the Muslim League?" The clap of cruelty was sounded by both hands. "Now tell me an incident from the other side too." Mushtaq Singh laughs and says, "All right, I will tell you. But shall I tell you what befell the world or what I experienced at first hand?" I reply, "Tell me about what happened to you." And he replies, "I had 11 people in my family. 10 of them were murdered in front of my eyes. I have been living in Mushtaq Singh's room for a year. I still don't understand one thing. Mushtaq Singh, why did those people leave you? Good people like you, no matter which caste or religion they might be born in, are always hung from the gallows. How did you escape?" He is in Glasgow these days. When the 2 of us were parting, I had taken his kada to wear. I still have it on my wrist. Whenever I think of him, I feel he is in front of me and he is saying, "बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियाँ मेरी." अब इसके बाद मैं किताब का एक हिस्सा पढ़ूंगी जो जावेद साहब ने कहीं एक स्पीच दी थी, तकरीर की थी, और उसमें से ये निकला हुआ है। बच्चों पर धर्म नहीं थोपना चाहिए और ना ही नासिकता, इसका उन्वान है। फिर कुछ उसके हिस्से काट के यहाँ से मैं दे रही हूँ। हम अपने बच्चों को धर्म नहीं, अपनी संस्कृति सिखाना चाहिए, लेकिन वो भी बदलती हुई होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बच्चे डोरी में एक छोटा सा कंकर बांधते हैं और वो कंकर बांध के अपने सिर के ऊपर से घुमाते हैं, धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं और वो सर्कल जो है वो बड़े से बड़ा होता चला जाता है। इसमें ये पत्थर जो है ये रिवोल्ट है, वो दूर जाना चाहता है। ये डोरी जो है ये ट्रेडिशन है, वो उसे रोकती है। अगर आप डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा, और अगर आप पत्थर निकाल दें तो डोरी इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती। ये दोनों चीज़ें चाहिए। हम अपनी ट्रेडिशन को तोड़ें नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसे ढकेलते रहें, उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते रहें। जो चीज़ें कमज़ोर हैं, ख़राब हैं, जो पत्ते सूख गए हैं, वो डाली से गिरते रहें, और जो नए फूल पत्ते हैं उनको इजाज़त दीजिए कि वो उभरें, वो आहिस्ता आहिस्ता खिलते रहें। इस तरह दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पेड़ को जड़ें भी चाहिए और शाखें भी चाहिए। पेड़ सिर्फ जड़ नहीं होता है,
पेड़ सिर्फ शाख नहीं हो सकता, और जितना ऊंचा पेड़ जाएगा, जितना वो फैलेगा, उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना वो गिर जाएगा। Poetry happens when language dreams. It is said that poetry is the language of dreams. Poetry is not just about meter and rhyme, nor is it only about rhythm and rhyme. If it did, then 71, 72, 73, 74, 75 and 76 would also be poetry. Poetry flows from thoughts. I sometimes feel that poetry is the dream of language. When a language dreams, poetry happens. When a language is awake, there is prose. Language is a very powerful thing. So are words. But in themselves, words are neither good nor bad. We should love words and know their power and strength, because whatever has happened in the world has happened because of words, or else it wouldn't have happened. So, respect words, love words, make friends with words, listen to them carefully, and speak them carefully. Thank you. Thank you very much.